नेक्स्ट वी हैव सेंटीपिटल फोर्स। ये वो फोर्स है दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट इन अ circular motion. So first we are going to explain that centripetal force is required to produce and maintain circular motion. और फिर equations और formulas भी हैं that will help us describe and calculate centripetal force as well. अब when a hammer thrower moves an athletics hammer around a circle, आप देखो कि एक फोर्स ऑफ टेंशन तो होगी, ठीक है, क्योंकि आप इसको एक सर्कुलर मोशन में इस गोले को घुमा रहे हो, और इस वायर के अंदर हर वक्त एक टेंशन रहेगी। जब ये बॉल इधर आ जाएगा तब भी टेंशन आपके पास उस तरफ रहेगी, जब वो बॉल इधर आ जाएगा तब भी टेंशन इज गोइंग टू रिमेन देयर। सो दिस फोर्स ऑफ टेंशन इज द वन दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द व्हाट, सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स खुद एक फोर्स नहीं है, इट इज ऑलवेज ड्यू टू सम अदर फोर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दैट फोर्स इज योर टेंशन। अगर लेट्स से एक अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द सैटेलाइट कैसे मूव कर रही है, अर्थ के इर्द गिर्द सैटेलाइट इस तरह मूव कर रही है क्योंकि उसको जो सेंटीपिटल फोर्स मिल रही है, उसको किससे मिल रही है हमारी सेंटीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से। यू गेट इट। कभी कभार सेंटीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से भी मिलती है। जब आपने फार्मूला वन रेसिंग देखी हुई है, तो जब वो गाड़ी सीधी चल रही है तो ठीक है, लेकिन जब वो टर्न आता है तो वो रोड बेंड हो जाती है। रोड बैंड क्यों होती है, ताकि गाड़ियों को मुड़ने में आसानी हो, बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग देम विद द सेंटीपिटल फोर्स। तो कभी फ्रिक्शन सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, कभी फोर्स ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। इस सैटेलाइट को हमारी ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। सो द हैमर इज मूव्ड इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी is always the same. However, direction of the velocity is constantly changing, and this means that the vector of velocity is constantly changing and its acceleration is also changing as well. और ये न्यूटन सेकंड लॉ के वजह से ये तब हो रहा है जब कोई ना कोई फोर्स है, इसलिए एक्सेलरेशन चेंज करिए ना, बिकॉज देर इज एनी फोर्स दैट इज एक्चुअली देयर चेंजिंग द एक्सेलरेशन. So Newton's first law tells us that acceleration will only happen if there is a resultant force, and the hammer is constantly being pulled towards the center of the circle. And in this example, the force providing this pull is the tension in the string, and we call that force as the centripetal force. The first formula of centripetal force that you have to memorize is mv square over r. Got it? And the second formula that you have to memorize for जी. centripetal force is mr omega square. Clear? You can see this Yes. वर्कड एग्जाम्पल ओवर हेयर एज वेल। आपको टाइम दिया हुआ था, आपको आर दिया हुआ था, आपने उधर से सबसे पहले वी निकाल लिया। जब वी आपके पास आ गया तो यू हैव पुट इट इनटू द एम वी स्क्वायर ओवर आर टू फाइंड द सेंटीपिटल फोर्स ओवर हेयर एज वेल। सो दीज आर द फॉर्मूलाज दैट यू हैव स्टडीड इन सर्कुलर मोशन सो फार। यहाँ तक क्लियर है? Centripetal force is the resultant force towards the center of the circle to maintain an object's circular motion. And that is the end of your 5B formula sheet. याद रखें ताकि it can help you solve the questions that we are about to do as well.